Hello everyone. Good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening all. Just wanted to understand like what exactly have you learned in Excel till now? Can anybody tell me? I was informed that I need to start with pivot tables and try to help you in learning how to create a dashboard out of it with Excel. So before that, I just want to understand from you what are classes happened. Anybody? Hello? Hi, sir. This is Preeti. Yeah. Uh, Hi. yes, sir. We have completed count if, sum Mhm. if formulas, and Okay. after that, we have completed find formula also, find if error, if number, So and basically, you have learned how to use the functions. Okay, yes, sir. the formulas and all you have used. Pivot Yes, sir. tables and all not yet started, Yes, sir. right? Already started, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Also learned about lookups, H lookups, X Mm, lookups, and index match functions. okay. Also that function. Just give me 2 minutes. Huh? Just give me 2 minutes. I'll be. Okay. రిస్క్ తీసుకోలేము అలానా ఓకే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎస్ఐటి రెగ్యులేటర్ కాదు Okay. Sorry for that. I just got a call. Okay. So you have learned the pivot table and all. Now I think maybe you are looking. Have you created any kind of dashboard? No, sir. No? Okay, okay. Let me do one thing. Let me share my screen. Okay, and I will share you another file. You might have received one file that is a basic pivot table. I thought you have not learned pivot table, so I shared that one. Now I will be sharing another sheet. Okay, just use it. This sheet you can use it. Okay, let's start. Okay, can anybody tell me what is the main purpose of a pivot table? Why do we use pivot table? Any idea? Sir, it is used to summarize the data Very good. Okay, and for basically, reporting purpose. correct. Very nice. Okay, basically, we create pivot tables to summarize the data. When we have a data in thousands and thousands or millions of data, when we cannot infer any information out of it, right? To make any kind of decision making, we need to understand what is happening inside the data, right? To summarize that information, we generally create reports. And in Excel, if you want to create any kind of report, generally we will use pivot tables. So
Here we will learn two things. Okay, today maybe I will teach you how to analyze data and how to create a dashboard out of it by using one table. Okay, that is orders table. Okay, tomorrow we will learn when we have multiple tables. Okay, when we have orders, returns, and peoples. Okay, when we have multiple tables, we need to create a data model out of it to use it. Right. So how to create any? Have you learned Power Pivot by any chance? No, sir. Okay, so that part I will teach you tomorrow. Power Pivot is basically used when you have multiple tables and you need to create a star schema out of it, and based on that you can create the create the dashboard out of it. Okay, so we will learn that that is an advanced part. There you will see a lot of cleaning also. It is a mini version of Power BI. Okay, have you learned Power BI by any chance? Yes, no? Sir, I only know the basic. Okay, right. Right. Okay, I would request if you can unmute and talk, it would be helpful for me because I will not be looking into the chat. Okay, so let's make this interactive. If you have any questions, you can ask me. Just to introduce about me, my name is Sujit, and I am in the BI platform, BI industry from the last 10 years. Okay, I'm working for one of the top consulting companies right now. Okay, and I have created multiple Power BI reports and Excel reports for different organizations which are in production right now, where people are the decision makers are using it. Okay, so you can ask me any kind of questions related to data analysis of or business intelligence. Okay, I will try to help you and make you understand what exactly happens in organization level. Okay, Okay, sir. right. Okay, so let's do one thing. Let's create a kind of requirement, okay, as an end user, how we will get a requirement. For example, I will take a text document. I will make it as requirement doc. Okay, first we have a data. Let's try to understand the data, okay? This is sample superstore data. Basically, it is a superstore where we have in US basically. So what is the data available here? We have an order ID. So every time a person places an order, it will generate one order ID, right? Whenever you purchase anything in Amazon or Flipkart or any online store or offline store and all, for every order, there will be an order ID will be generated, right? Similarly, on what date you have ordered, once you order any product, the same day it may not start for shipping. Okay, if you order today, maybe after tomorrow or day after tomorrow they will ship it, and after 2-3 days it will be delivered to your place, right? So your order date will be different and your ship date will be different. And then you have something called shipping mode. Shipping mode is nothing but like same day delivery or 1 day delivery, okay, or standard delivery, like this we will be having, right? So this is called shipping mode. If I put a filter here, you can see first day delivery, same day delivery, second class, standard class. Like this, we have multiple shipping modes we are having. Similarly, which customer has bought? Every customer will have a customer ID. See, if this person, okay, this person is having a customer ID, it will be same for the same person. Okay, every customer will have a identification number that is called as customer ID. His name, that customer belongs to which segment? Okay, whether he is a consumer, whether he is a corporate customer, whether he is a home office. So we have three different segments of people are there. So whoever is ordering, which segment he belongs to. Similarly, which country he belongs to, this entire data belongs to only US, so we have only one country. But in US, we have multiple cities. Okay, we have multiple cities and we have multiple states. Okay, different locations are there. And then its postal code, and then which region. Okay, we have 4 different regions in US. So these are the 4 different regions. And what product the customer has ordered, every product will have a product ID, and that product belongs to which category, whether that product belongs to furniture or office supplies or technology.
which category it belongs to. Inside furniture, then again we have multiple subcategories. Like for example, if I filter here, if I filter only furniture, inside furniture we have 4 different categories. Okay, chairs, whether he has ordered for a chair or a furnishing or table or bookcases. Similarly, in technology we have multiple subcategories. Okay, we have phones, copiers, machines, accessories. Okay, so every category is having some subcategory, and then every subcategory there will be the name of the product. Okay, the product ID is there now. For every product ID there is a kind of product name. So how much sale happened, what is the quantity sold, what is the discount offered, what is the profit generated by the company, that's all. Okay, this is the data we have. Okay, any difficulty in understanding the data? No, sir. Right, it's a simple data, everybody can understand this one. So out of this thing, for example, you are my developer. Okay, I am your client, you are my developer. I want to understand few things. Okay, so what I will do generally, I will give you a requirement document. In this requirement document, what I will tell you, please analyze this data and tell me what is the total sales. Okay, similarly, I will ask you what is the total profit generated. What is the total quantity sold? What is the total discount offered? Okay, and then I will say, find me each category by sale. That means each category. How many categories we are having here? How many categories? We have 3 categories, right? Furniture, office supplies, and technology. Yes or no? Yes, sir. Yes, no? So we have 3 different categories. So each category, what is the sale happen in each category? Similarly, each region, what is the sales? Similarly, what are the top 5 subcategories by sales? That means I want to know which are the top 5 subcategories which are giving me highest sales or else highest profits. Let us do it profits. Okay, so what are the 5 subcategories? We have multiple subcategories. If I come here and apply a filter, you can see we have close to 15 subcategories. We are having 15 or 17 subcategories we are having here, right? Out of these 17 subcategories, which are the 5 subcategories which are giving me highest profits? Clear? Yes, no? Following? Right. Then I want to filter all these things, or else let us do one thing. Instead of each region here, I will put it as segment. Okay, and all these things I want to filter the above by using a region slicer. Okay, I need a region slicer. Whenever I select each region, I need to get each region sales, each region profit, each region quantity, each region discount. Similarly, I want to know each region, each category sales, each region, each segment sales, each region, what are the top 5 subcategories which are giving me profit, only related to each region. If I select West, accordingly, everything should change. Right? Following? Yes, no? Any questions in the requirement? Any difficulty in understanding the requirement? No, sir. All good? Yes, sir. All good. Right. Okay, let us try to create a dashboard out of this. Then we will add up something if we have more time. Okay, so let's try to create this one. Okay, so remove the filter. So how to summarize the data? What is the first step we need to do? So select the data. Okay, we have selected the data. Then
First No, thing, sir, we have to select insert column to create pivot chart. correct. Very good. But before that, what we need to do, this we need to convert it into a table. Table. Okay. Yeah. Why we should convert this into a table? Any idea? Yes, sir. So that if there is any like if we have to add any data, then automatic it will take the data. Correct. Very nice. So basically, why we need to create a table is like, for example, this is the data till yesterday. Okay. Till yesterday, this is the data generated. But tomorrow also, today also, there will be some sales will happen. Tomorrow also some sales will happen, right? Every day there will be some sales is going to happen. That means what will happen? At the bottom of the sheet, new rows will be added, right? As soon as a new sale is happening, here based on the date, order date, here you will get the order date of today, tomorrow, like this will keep on adding up the data. So if you are not selecting, if you are not converting this into a table, this data will be skipped in your summarized dashboard, right? So we don't want to skip this one. As soon as the new data comes here and we refresh it, automatically I should be able to see the new numbers in my dashboard, right? Yes, sir. So that's the reason we need to convert this one into a table. So how to convert this one? You can select anywhere in the data and go to home tab, format as a table, and you can select anything, or else you can do Control T. Right? What is the shortcut? Control T. If you do Control T, the entire table will be selected. My table is having headers, so I will check this one and then click on OK. So this has been converted into a table. I can rename this one here, the table name. Instead of table 1, I will mention it as orders table. Till now clear? Sir, actually, hello. Yeah, Sir, tell me. Sir, what is the shortcut key? Control T. Okay, by Okay, using okay, sir. control, you need to press T. Convert to table. I will share this document with you. Okay, convert to table means control plus T. Clear? Right. So we have converted this into a table. Now we need to insert the pivot table. So what I will do, I will come here, go to insert and click on pivot table. I want to do it in a new worksheet. Okay, I want to create the this one in a new worksheet. My entire table has been selected, orders, because we have changed the name of the table to orders, right? So I am taking it as orders. I will do it in new worksheet and click on OK. Okay, so this is the sheet where we are going to work. So these two tables are actually not required for today, so I will delete this one just to avoid the confusion. Tomorrow we will come to this one. Okay, we had the orders table and this is my pivot table. So what I will rename this as working sheet. Okay, this is going to be my working sheet. Maybe I will order this one in this way. This is my data, this is my working sheet, and I will add one more sheet and will name it as dashboard. Okay, till now clear? Yes, right. Now we have here 4 different items are here. One is filters, another one is columns, and third one is rows and values. What is the use of these 4 things? Anybody? What is the use of filter? Anybody? What is the use of filter? Sir, we use the filter for find any data in any way. Correct. So basically, for example, let me create something. Okay, let us create from here only. First, what we want, total sales I want. Okay, to create total sales, for example, I will add one more thing. Okay, I will add one more thing called total revenue. Okay, this is another thing. Okay, right. So first I want to calculate total sales. Total sales means what column is required to find out the total sales? I want to know the overall sales. So what is the one which is required out of this table?
which is required? Sales column is required, right? Yes or no? Yes, sir. If I want to know the total sales, in general, what we need to do? We need to add up everything what is available in this column, right? Yes, sir. So what is the total sales? Basically, this is my total sales actually. When we sum up all those things, this is the value which we are getting. So every time you need to understand, okay, whenever they gave you any kind of requirement, okay, 100% don't imagine or don't assume that everything whatever they have given is correct. Okay, there could be a lot of mistakes in the requirement itself, which we need to question. Okay, in real environment, when you are really working as a developer in any of the organization, whenever they give you some requirement, don't assume that whatever they have given is correct and we have all the information. There will be situations where they will give you something and that information will not be available. Okay, yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, before we continue, I just wanted to understand in your earlier classes, everything was how the class used to be. It used to be in English or Hindi or a mixture of English, Hindi, Odia, how it used to be? Sir, mixture of Hindi, English, Odia. Okay, okay, okay. I can also use it. Okay, so if everybody is comfortable, we can go in Hindi or we can go in Odia also. I have little issue with Odia, but I can manage. Which language do you prefer, everybody? It's okay, sir. No issue. Any language you want. Everybody are okay? Because I need questions from you. That is the only thing. Okay? ठीक है ना? जो भी आपको डाउट है, कैसा भी डाउट है, प्लीज आस्क मी. ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हमें जो भी रिक्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, जब भी हम काम करते हैं, हमें जो भी रिक्वायरमेंट मिलता है, इट डजंट मीन दैट जो भी वो लोग देते हैं वो करेक्ट है और हमारे पास सब कुछ है, हमें ही डेवलप करना है. बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे वो रिक्वायरमेंट जो हमें मिलता है उसका डेटा भी हमारे पास नहीं होता है, एंड दे विल they and you yourself will think that yes, they have given everything, now issue is from my side, I am not able to create this one. No. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, टोटल सेल्स चाहिए उनको. टोटल सेल्स कैसे आएगा? वी नीड टू हैव ए सेल्स कॉलम. हमारे पास सेल्स कॉलम होना चाहिए. तो हमारे पास सेल्स कॉलम है. So by using this column, I can create the total sales value. So how to create? I will go to my working sheet. यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी हमारा सेल्स कॉलम है उसको लेके कहाँ पे डालना है? This column where I should put in filters, columns or rows or values? Value. Value. क्यों Values values में? क्यों values में? क्यों नहीं columns में? क्यों नहीं rows में? सर इनका क्वांटिटी ऐड करना है, मतलब सम आना है. Correct. सर इस सर ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हाँ. इसलिए हम इसको या वैल्यू. राइट. न्यूमेरिक वैल्यू मतलब टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो टेक्निकल टर्म्स में नंबर्स होता है सर. नहीं नहीं, या दैट इज करेक्ट, बट इन टेक्निकल इन बीआई लैंग्वेज जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है या फिर डेटा एनालिसिस होता है, उसमें क्या होते हैं, दो तरीके की चीजें होते हैं. क्या होते हैं वो? एक होता है फैक्ट, ओके, एक होता है डायमेंशन. ओके, ये दोनों कभी सुने हो आप लोग, फैक्ट एंड डायमेंशन? नो? नो सर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो फैक्ट मतलब क्या होता है? जो विच यू वांट टू मेजर. ओके, जो मेजरेबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट बोलते हैं. जैसे कि आपको क्या मेजर करना है? सेल्स मेजर करना है, या फिर प्रॉफिट मेजर करना है, या फिर क्वांटिटी मेजर करना है. ओके, तो दीज आर ऑल विच आर मेजरेबल. ओके, उसको क्या बोलते हैं? हम फैक्ट कॉलम्स बोलते हैं. ओके, अगर फैक्ट कॉलम, अगर इफ दिस इज गोइंग टू बी ए फैक्ट, इसके लिए दो रूल होते हैं. पहला रूल ये होता है, इट हैज टू बी ए न्यूमेरिक कॉलम. डेटा टाइप क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक. न्यूमेरिक होना ही चाहिए. अगर इफ इट इज नॉट न्यूमेरिक देन इट इज नॉट फैक्ट. क्लियर?
Yes, sir. सेकेंड रूल ये होता है, इफ आई एम डूइंग ए सम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, अगर मैं उस कॉलम के ऊपर एक सम डालता हूं, सम फंक्शन यूज करता हूं, देन इट शुड गिव मी ए मीनिंगफुल रिजल्ट। ओके, मीनिंगफुल रिजल्ट आना चाहिए। मीनिंगफुल रिजल्ट मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोन नंबर का कॉलम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव समथिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर में कैसे होंगे नंबर्स? फोन नंबर कैसे होते हैं? 9966931234 फॉर एग्जाम्पल, 12345678910। ओके, ये एक फोन नंबर है, राइट? Yes, sir. तो इस कॉलम में जितने सारे होंगे, इट विल बी सिमिलर, इट विल बी सिमिलर। ऐसे जो 10 नंबर होते हैं वैसे ही 10 नंबर यहाँ पे भी हर जगह पे होंगे, राइट? तो अब ये न्यूमरिक है कि नहीं है? Yes. दिस कॉलम इज न्यूमरिक, राइट? Yes, sir. दैट डजंट मीन इट इज ए फैक्ट कॉलम। ओके, क्योंकि हमारे पास दो रूल है। एक रूल है इट हैज टू बी न्यूमरिक, एंड सेकेंड रूल है अगर इसके ऊपर मैं सम फंक्शन अप्लाई करता हूं, इट शुड गिव मी सम मीनिंगफुल रिजल्ट। इसके ऊपर अगर मैं सम अप्लाई करता हूं, इट इज गोइंग टू गिव मी ए वेरी बिगर नंबर, ऐसा नो? Yes, sir. बट उसका कुछ मीनिंग होता है क्या? No, sir. नो। so even though this is a numeric column, this cannot be considered as a fact column, ठीक है? Mhm. ओके, अदर देन दिस थिंग एवरीथिंग इज डायमेंशन। डायमेंशन मतलब, एक्चुअली डायमेंशन का मतलब होता है विच गिव्स कंटेक्स्ट टू द फैक्ट। ओके, डायमेंशन कॉलम वो होता है जो एक फैक्ट कॉलम को कंटेक्स्ट देता है। कंटेक्स्ट देना मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेल्स मेरा क्या है? फैक्ट कॉलम है। अगर मैं बोल दूं कैटेगरी बाय सेल्स, तो कैटेगरी क्या दे रहा है? इस सेल्स मेजर को ये एक कंटेक्स्ट दे रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है कि आपका जो भी सेल्स है उसको मुझे डिवाइड करके ईच कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स बताओ। कैटेगरी 1 का क्या सेल है, कैटेगरी 2 का क्या सेल है, कैटेगरी 3 का क्या सेल है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डायमेंशन। सिमिलरली सेगमेंट बाय सेल्स, इसमें फैक्ट क्या है, डायमेंशन क्या है? The dimension है segment और वेरी गुड, sales है fact. फैक्ट है सेल्स। सिमिलरली सब कैटेगरी बाय प्रॉफिट, तो सब कैटेगरीज है dimension. डायमेंशन, और Profit. प्रॉफिट है हमारा फैक्ट, राइट? फैक्ट और डायमेंशन के बिटवीन डिफरेंस इज क्लियर? Yes, sir. Okay, this is one of the interview question. Okay, any BA interview you are going to attend, this is a kind of 90% they are going to ask you this question. What is the difference between fact and dimension? Okay, right. Okay. Now you tell me, for example, if I come to orders table, row ID is a fact or dimension? The dimension. It's a dimension. Why it is a dimension? Sir, it's a numeric data type, but it's some It of this doesn't column. give any meaning when you do a sum. Okay, basically row ID से हम कुछ भी measure नहीं कर पाएंगे, right? Yes, sir. So this is not going to be your fact. Similarly, what about postal code? The dimension. This is also a dimension. You cannot get any meaningful result when you add up all these things. Okay. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे जो रूल बोला है, it is for you to find out whether it is a fact or dimension. But in interview, if somebody is asking you what is fact, fact is something which you want to measure. Okay. इसका definition होगा. Multiple definitions are there, but the easiest one is it is something which you want to measure. ठीक है? Yes, no? Yes, sir. राइट। तो हमेशा क्या होता है, हमारा फैक्ट कॉलम, फैक्ट जो भी होता है दैट विल कम टू योर वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर फैक्ट कॉलम विल कम टू द values and your dimensions will go into columns or rows or filters.
कभी भी आपका फैक्ट वैल्यू फिल्टर्स और कॉलम्स और रोज में नहीं आते हैं, ठीक है? Okay. यस नो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेल्स को फिल्टर में डाल देता हूँ, तो इट डजेंट गिव मी एनी सेंस। हम यहाँ से ऐसा कोई भी सेलेक्ट नहीं करेगा फिल्टर करने के लिए, राइट? This is not the correct way to filter the things. Always it has to be a dimension. You want to filter something, it will be based on dimension. For example, product wise, pehle let us create sales. Okay, how to create sales? I need to take the sales column, as this is a fact column, we will be putting it in value. So this is going to be my sales. Clear? Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Right. Now, what is our second requirement? Second requirement is for total profit. So what we can do, we can copy the same thing and then come to some other row and paste it. और यहाँ पे क्या करना है? सेल्स को हटा के क्या डालना है? I want to know the total profit. क्या करना है? Profit. Profit को लेना है. Okay, so we can search from here if you want and take the profit and put it where? Values. Values. Very good. Okay, so ये हो गया हमारा Sum of profit, right? total. या उसके बाद कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। अभी हमें क्या चाहिए? टोटल क्वांटिटी। तो क्या करना है? सर्च करेंगे क्वांटिटी, प्रॉफिट हटा के वी विल गो विद क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के साइड में टिक करने से भी तो वो आ दिखाएगा। जाएगा, आ जाएगा, हाँ। आ जाएगा। ये जो चेक बॉक्स होते हैं ना, हाँ। वो चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने से भी इट विल पावर बी और एक्सेल इज हैविंग द इंटेलिजेंस कि उसको समझ में आ जाता है वेदर इट इज ए फैक्ट और डायमेंशन। ओके, so Yes. it can understand whether it is a fact and dimension and accordingly it will drop it here, but that is not the correct way to do. ठीक है, वैसा हो जाएगा बट कभी कभी वैसे भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर होना है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इसको कहाँ पे डालना है। ओके सर। ठीक है, तो इनिशियली जब अब सीख रहे हो, डोंट डू इन दैट वे, ट्राई टू पुट इट इन आउट ऑफ दीज फोर बॉक्सेस, नो, एट एनी वन ऑफ द प्लेस ट्राई टू पुट इट। ओके। ओके, ओके। राइट। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी। उसके बाद फोर्थ वन क्या चाहिए हमें? डिस्काउंट। डिस्काउंट। आई विल कॉपी दिस, यहाँ पे क्या करेंगे? क्वांटिटी हटा के we will take the discount column and put it in values, right? Next, what we want? We want revenue, total revenue. Okay, so what we need to do? क्या करना है? डिस्काउंट को हटा के रेवेन्यू को ऐड करना है। So I will search for revenue. So I am not finding anything in revenue. ऐसा कोई कॉलम नहीं है। Then what we need to do? तो सेल्स के साथ प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सेल्स के साथ प्रॉफिट ऐड करने से क्या होगा? एक सेकेंड, बी ऑनलाइन। आई एम गेटिंग वन कॉल, आई विल बी बैक इन 1 minute. ओके।
sorry guys. So now we are talking about revenue. So revenue के लिए देखो, that is what I was telling you. Okay, हमारे पास requirement ऐसे आएगा. Guys, can you hear me? Yes, sir. राइट, हमारे पास कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा आता है, वो लोग डाल तो देते हैं कि टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करो, मगर उसका रिलेटेड कोई भी कॉलम हमारे पास नहीं होता है, जो डेटा हमको मिलता है उसमें नहीं होता है। तो हमें खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना है कि सेल्स और प्रॉफिट को ऐड करने से रेवेन्यू आएगा, या फिर सेल्स और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से रेवेन्यू आएगा, या फिर डायरेक्टली रेवेन्यू कॉलम होना चाहिए, वो नहीं है तो ये शायद रेवेन्यू कॉलम है, ऐसा अज्यूम नहीं करना है कभी भी। जो भी थोड़ा सा डाउट आता है जब भी तुरंत क्लाइंट को पूछना है कि सर आपने यू हैव आस्क्ड मी टू क्रिएट कैलकुलेट रेवेन्यू, आई डू नॉट हैव ए डायरेक्ट कॉलम कॉल्ड रेवेन्यू, डू वी हैव ए लॉजिक टू फाइंड आउट रेवेन्यू और डू वी हैव ए डायरेक्ट कॉलम? देन ही विल टेल यू कि ओके मे बी रेवेन्यू के लिए एक लॉजिक होता है, that is like sales multiplied by quantity. ऐसा आप एक कॉलम क्रिएट करके बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट रेवेन्यू, ही कैन टेल यू दिस थिंग। या फिर बोलेगा कि रेवेन्यू कॉलम एक डायरेक्ट कॉलम है, उसको कोई दूसरे टेबल से आप ले लो, तो ही विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन। अनलेस अंटिल वी आस्क देम आवर क्वेश्चन दे विल नॉट इन्फॉर्म यू। वो लोग एज्यूम कर लेंगे कि आपके पास सब कुछ है और आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है? Okay, यस sir. नो, राइट। तो कभी भी रिक्वायरमेंट में कोई भी गड़बड़ आता है या फिर कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप ये मत सोचो कि हाँ वो लोग सब कुछ हमें दे दिए, अभी हमारा प्रॉब्लम है, वी नीड टू क्रिएट। ओके, दिस विल ऑलवेज हैपेंस इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। ओके, अगर आप 10 रियल टाइम प्रोजेक्ट करोगे, 9 में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया गया होता है। एवरीबॉडी फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is a question mark. We don't have a clear information how to calculate revenue. Right. Next we will go to the other one. So what we are saying, each category and sales. तो हमें क्या चाहिए? Each category और उसका sales चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या क्या कॉलम चाहिए यहाँ पे? To get this one, what are the columns required? The category and sales. हमें कैटेगरी कॉलम चाहिए और सेल्स कॉलम चाहिए, ये दोनों अवेलेबल है क्या? So if I come here, if I say category, I have the category. If I say sales, I have the sales. So हमें जो जो चाहिए वो अवेलेबल है। तो कैटेगरी को कहाँ पे डालना है हमें? Rows में. रोज में। Why not in columns? So there might be lots of categories. Okay. हमारे पास कैटेगरी 3 ही है ना, फर्नीचर है, टेक्नोलॉजी है। सर कैटेगरी के सेल्स भी तो दिखाना है ना, इसलिए करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी कॉलम्स में डालता हूँ, ठीक है, एंड सेल्स को वैल्यूज में डालता हूँ, ठीक है। कैटेगरी हमारा डायमेंशन है, सेल्स हमारा वैल्यूज है। तो यहाँ पे भी वी कैन सी ना, फर्नीचर का ये सेल्स है, ऑफिस सप्लाईज का ये सेल्स है, टेक्नोलॉजी का ये सेल्स है, इसमें गलत क्या है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड राइट? फर्नीचर का ये है मेरा सेल्स, ऑफिस सप्लाईज का ये है मेरा सेल्स, टेक्नोलॉजी का ये है मेरा सेल्स, ऐसा नो? ऐसा। Then why we should put category in columns, in rows? Why not in columns? There is no issue at all. But हमें कैसे represent करना है, ठीक है? How you want to show the summarized data, that is how it matters. Mostly हम भी जब भी summarized information दिखाते हैं तो हम लोग मतलब टेबल हम ऐसे दिखाते हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और उसका सेल्स क्या है, 10, 20, 30 ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दैट इज व्हाई दीज आर रोज, ये हमारे रोज है। अगर कैटेगरी के साथ ईयर वाइज डेटा दिखाना है तब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2022 2023 का डेटा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2022 डालेंगे, यहाँ पे 2023 डालेंगे,
और 2022 में C1 का सेल्स कितना है, 2023 में C1 का सेल्स कितना है, ओके 2022 में C2 का सेल्स क्या है, 2023 में C2 का सेल्स क्या है, लाइक दिस वी विल शो, ऐसा नो। Yes, sir. तो यहाँ पे which dimension should be in columns, year dimension should be in columns, okay, and category dimension should be in Rows. rows. अगर इधर से उधर उधर से इधर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट द सेम समराइज डेटा, इट ओनली डिपेंड्स कि हमको दिखाना कैसे है, ठीक है। Yes. So we will use category in the rows. So this is the better way to show the information. Numbers कुछ भी चेंज नहीं हो गए। अगर आप इसको अभी देखिए, फर्नीचर का क्या है 741998, इफ आई पुट कैटेगरी हियर स्टिल माय फर्नीचर का नंबर वही रहेगा, राइट, Yes, sir. राइट। तो हमें बस the way we show the data, summarized data, that is what it matters, okay. Mostly we will do it in this format only. So mostly we will put the dimension of category or segment whatever in rows. If you want to show time, then you will show it in the column. For example, मुझे order date के हिसाब से दिखाना है, तो order date को मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे columns में डालूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, 2014 में फर्नीचर का सेल्स क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। इन दिस वे इट विल शो। आपको जो भी कॉलम्स में दिखाना, मतलब यहाँ पे दिखाना है, ऊपर दिखाना है, दैट शुड बी इन कॉलम्स। जो भी आपको रोज में दिखाना है, दैट शुड बी इन रोज, दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर। Yes, sir. Right. So I will remove this, this is not our requirement, okay। each category और उसका सेल्स आ गया, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, ईच सेगमेंट और उसका सेल्स दिखाना है। फिर से क्या करेंगे, इसी को हम पूरा कॉपी करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैटेगरी व्हाट वी विल डू, Yes, sir. वी विल टेक द सेगमेंट डायमेंशन एंड पुट इट इन रोज, ठीक है, राइट। उसके बाद लास्ट वन क्या है, टॉप 5 सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो क्या करेंगे अभी, विल कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। यहाँ पे क्या होना है, सेगमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, सब कैटेगरी, राइट, और सेल्स की जगह क्या आएगा, हेलो, Profit. प्रॉफिट। मगर एक यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, हमारा यहाँ क्या दिखाना है, हमें Top ओनली five. टॉप 5 ही दिखाना है, राइट। हमें क्या दिखाना है, ओनली टॉप 5 ही दिखाना है। तो ओनली टॉप 5 कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है, राइट, ऑल द सब कैटेगरीज इज शोइंग, हाउ आई कैन शो ओनली द टॉप 5, एनी आइडिया। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट को। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से भी ये तो सारे दिखाई देंगे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर करने से इट इज नॉट लाइक ओनली टॉप 5 दिखाई देंगे, इट विल स्टिल शो ऑल द 16 और 17 सब कैटेगरीज, राइट। सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऐसा नो। सर वैल्यूज फिल्टर बाय करेंगे। ओके, वैल्यूज फिल्टर टॉप 10 में क्लिक करेंगे। टॉप 10, राइट, ओके, यहाँ पे आना है, वैल्यूज फिल्टर में जाके वी विल गो टू टॉप 10, और क्या बोलेंगे, हमें ओनली टॉप 5 चाहिए, हाँ, okay, top 5 items चाहिए based on profit, so we when you click on okay it will give us only the top 5 subcategories, ठीक है, यस सर। राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रीजन फिल्टर हमें डालना है, रीजन स्लाइसर डालना है। वो कैसे डालेंगे, एक स्लाइसर डालना है, क्या कैसे डालेंगे उसको, एनी आइडिया।
Just no. Chris, can you hear me? Hello. Yes, sir. Yeah, I'm asking you something कि स्लाइसर को कैसे डालेंगे? You know it, you don't know it. Yes or no? Just नहीं है? Then I will explain. If you want to try, just the reason for me to asking you a question is कि ताकि आप थोड़ा try करो. Try करने से that will give you some kind of confidence. That is the only thing. Okay? तो आपको पता है कैसे स्लाइसर को ऐड करना है? Yes, sir. Okay? कैसे करना है? Insert slicer. Insert. उसके बाद Slicer. this one. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फिर तो कुछ नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? एक चीज आपको याद रखना है, मैं जानबूझ के वो गलत दिखा रहा था। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको जब भी एक स्लाइसर को ऐड करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द पिवोट टेबल। पिवोट टेबल सेलेक्ट करके देन यू नीड टू सेलेक्ट द स्लाइसर। अगर आप पिवोट टेबल के बाहर हो एंड देन यू सेलेक्ट द स्लाइसर, you will not get the options. ठीक है? Yes, sir. बिगिनर्स मोस्टली दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स दे विल डू। ठीक है, हम लोग सोचते हैं, हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे स्लाइसर करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? यू नीड टू बी इनसाइड ए पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के अंदर आपको रह के देन यू नीड टू सेलेक्ट द स्लाइसर। क्लियर? Yes, sir. Right. Now what we want in slicer, we want the region. So region column है हमारे पास है। So I will select the region and select it. और ये स्लाइसर फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे 4 बटन की तरह चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे एक 4 बटन की तरह चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? The columns में one है कॉलम्स वो। में जाके we will say I need 4 columns, right? और इसको हम तो 4 बटन जैसा आ गया। अब अगर मैं ईस्ट को सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा? सर पाइवट टेबल में ईस्ट की वैल्यू आएगा। ईस्ट के वैल्यू आना चाहिए, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ईस्ट, अभी यहाँ पे देखो एक्सेसरीज 41936 है, ठीक है, और मैं साउथ में जाता हूँ, स्टिल मेरा एक्सेसरीज चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ पे चेंज हो रहा है? बस इसमें ही चेंज हो रहा है, सेगमेंट वाइज सेल्स ही चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, सर ये वाला स्लाइसर ओनली एक पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट है, इसलिए कनेक्टेड है, इसलिए वो एक ही चेंज हो रहा है, राइट? Yes, sir. तो इसको अगर मैं सबके साथ सेलेक्ट कर मतलब इंटरैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कैसे करना पड़ेगा? सर स्लाइसर टैब में जाके स्लाइसर टैब में जाके रिपोर्ट कनेक्शंस रिपोर्ट कनेक्शंस, एंड जो जो टेबल के डाटा चेंजेस करना है वहाँ पे जहाँ क्लिक। पे भी हमें चाहिए वो सारे टेबल को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक दिस स्लाइसर विल नॉट इंटरैक्ट विद दिस थिंग। तो मोस्टली कभी कभी क्या होता है ना, एंड यूजर क्या बोलते हैं कि मेरे जो केपीआई वैल्यूज है, जैसे सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी सब इंटरैक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा इट शुड शो मी द फुल वैल्यू, बाकी का जो है इट शुड शो मी फिल्टर्ड वैल्यू। ठीक है, उस टाइम में देन यू नीड टू चेक अनचेक दिस पिवोट टेबल्स। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. राइट, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी हैव क्रिएटेड आवर वर्किंग शीट। अभी डैशबोर्ड कैसे बनाना है? वेलकम टू द डैशबोर्ड शीट। पहले शीट को पूरा सेलेक्ट करके आई विल चेंज द कलर टू मे बी लिटिल ग्रे कलर। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डैशबोर्ड जैसा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वर्किंग शीट में मेरे क्या कितने केपीआई है, 1 2 3 4 केपीआई है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम हियर
एंड इंसर्ट 4 फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेप आप ले सकते हो. आई विल टेक दिस शेप. ओके, तो मैं यहाँ पे ये शेप ले लिया हूँ. ओके, ये वाला वैल्यू कौन कौन सा सेल में है? A4 में है, राइट. तो वो A4 का वैल्यू इसके साथ लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फंक्शन में जाके इक्वल टू, वो कौन सा शीट में है? वर्किंग शीट में है, राइट. तो आई विल गिव वर्किंग शीट एक्सक्लेमेशन मार्क, और कौन सा सेल में है? A4 सेल में है. तो एज सुन एज आई गिव दैट वन, इट विल गिव अस द नंबर. क्लियर? इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई भी सेल का रेफरेंस देना है, तो मैं क्या करूंगा? उस शीट का नाम दूंगा, एक एक्सक्लेमेशन सिंबल दूंगा, और वो कौन से सेल में है उसका सेल नंबर यहाँ पे दूंगा. देन दिस विल बी अटैच्ड टू दिस वन. ठीक है? तो ये आप कहीं पे भी मूव करोगे, नंबर भी उसके साथ मूव होगा. यस, नो? एवरीबॉडी क्लियर हियर? Yes, sir. राइट. उसके बाद इसको हमें थोड़ा बीच में करना है, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर. ओके, वी कैन मेक इट इन द मिडल. राइट. अभी इसका एक फॉर एग्जांपल एक टाइटल देना है. ओके, तो क्या करेंगे? उससे पहले पहले लेट अस क्रिएट ऑल द 4 व्हाट वी कॉल कार्ड विजुअल. तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, 2 3 4. ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वाला है, ये मेरा थर्ड वाला है, ये मेरा फोर्थ वाला है. I think we can even align this one. Let me try it from here. Select all, go to view, align data. I'm not finding it. एक align का होता है जहाँ पे हम you can put it everything align. ओके, ये align में जाके फॉर एग्जांपल align टॉप कर दूंगा, तो सारे एक लाइन पे आ जाएंगे, राइट. अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो मैं इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल से अलाइन टॉप. तो क्या हो जाएगा? ये सारे एक लाइन पे आ जाएंगे. ठीक है? यस, नो? राइट. तो अभी यहाँ पे क्या देना है? इंस्टेड ऑफ सेल्स वी नीड टू गिव प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब A8 है. ठीक है, विल कम हियर, इंस्टेड ऑफ A4 आई विल मेक इट A8. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ A8 A12 आना चाहिए. तो दिस वी विल चेंज इट टू A12. इसको क्या करना है? A16. A16. वेरी गुड. so we will change it to A16. राइट. तो हमारा 4 कार्ड विजुअल्स हो गए जहाँ पे हमने वैल्यूज डाल दिए. अगर आपको डेसिमल वैल्यूज नहीं शो करना है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 4 डेसिमल की जगह कुछ भी डेसिमल नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो प्रॉफिट में भी डेसिमल हट जाएगा. ठीक है? क्लियर? कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव कॉमा, ओके, तो यहाँ पे भी वैसा ही आ जाएगा. ठीक है? राइट. तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग. तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग वी गॉट द वैल्यू. अभी यहाँ पे कुछ टाइटल देना है. टाइटल कैसे देंगे? इंसर्ट में जाके वी विल टेक ए टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक टाइटल बना दूंगा. ओके, तो इसका वाइट कलर आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू, शेप फॉर्मेट में जाके आई विल चेंज द शेप फिल टू
नो फिल, मतलब कुछ भी फिल नहीं करना है, ताकि इसके साथ वो मैच हो जाए। ये बॉर्डर्स को भी, शेप आउटलाइन को भी मैं क्या करूँगा, नो आउटलाइन कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं डालूंगा फिल। तो क्या होगा, द बॉक्स हमने जो बनाया दैट विल नॉट बी शोन। ठीक है, Okay. तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, पेस्ट करूंगा यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ सेल्स आई विल गिव, ये क्या था हमारा, Profit. प्रॉफिट। ओके, सिमिलरली ये Discount. हमारा Discount. डिस्काउंट था क्या, डिस्काउंट नहीं, शायद क्वांटिटी, Oh, क्वांटिटी है sorry. ना। Quantity. हाँ. तो इसको हम क्वांटिटी कर लेंगे, जरूरत पड़े तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, फिर पेस्ट किया और इसको हम डिस्काउंट। यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ है, जैसे कि मैं इसको पकड़ के खींच लिया, तो क्या हुआ, सेल्स इसके साथ नहीं आए। ठीक है, तो उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, बेसिकली आपको क्या करना है, इसको और ये सेल्स को दोनों को सेलेक्ट करके यू नीड टू कम टू पेज लेआउट, और इसको क्या बोलना है, यू वांट टू ग्रुप इट। एक बार ये ग्रुप हो गया तो क्या होगा, इसके साथ मूव होगा, तो इट विल लुक लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट। Okay. जो भी विजुअल्स को आपको ग्रुप करना है, यू नीड टू सेलेक्ट इट बाय यूजिंग कंट्रोल एंड देन यू नीड टू ग्रुप इट। ठीक है, Okay. राइट। और अगर इसके बीच में गैप ज्यादा कम है, इसके बीच में गैप ज्यादा है, ऐसा है, राइट, तो हाउ टू फिक्स दैट वन, Sir, align. अलाइन, अलाइन व्हाट, Align हॉरिजेंटली, horizontal. डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। ठीक है, हाँ. हाँ. डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर देंगे तो इसके बीच में गैप हमें, इट विल लुक सेम। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग के 4 विजुअल्स हो गए। उसके बाद क्या करना है, ईच कैटेगरी बाय सेल्स, सेगमेंट बाय सेल्स, सब कैटेगरी बाय प्रॉफिट। तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो इसको मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट इट इन ए चार्ट, तो क्या मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पिवोट चार्ट में जाऊंगा, राइट, या फिर रिकमेंड, यहाँ पे चार्ट्स आ गए, इंसर्ट में चार्ट्स आ गए, तो विच एवर चार्ट वी वांट we can select. For example, I want to convert it into a column chart, so I will select this and click on OK. So this will be my कॉलम चार्ट। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा लेबल्स चाहिए, तो लेबल्स कैसे आएंगे, टाइटल चेंज कर लेता हूँ। ये है हमारा कैटेगरी, राइट, कैटेगरी बाय सेल। तो इसको हम इस प्लस में जाके आई कैन गिव द डेटा लेबल्स। ठीक है, डेटा लेबल्स दे सकते हैं यहाँ पे, तो इट विल गेट द नंबर, राइट। इसमें लेजेंड, ये इसको लेजेंड बोलते हैं, ये जरूरत नहीं है, तो आई विल डिसेबल दिस वन। ठीक है, अगर आपको कुछ कलर फॉर्मेटिंग करने हैं तो यहाँ पे आके यू कैन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम हियर, राइट। You can also select here, do a right click, format chart area, और fill बोलो, color for example if I give something like this, और bars का color for example I want to change it to this one. So any kind of formatting you can do it from here. ठीक है, so now I will select this and copy this, go to dashboard and place it somewhere here.
Any questions? No, sir. No, Yes, sir. ma'am. Right. Similarly, we'll go to the working sheet again, and now I will take this one, convert this into a, for example, pie chart. इसको भी हम फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसको भी सेम कलर जो लिए थे शायद ये लिए थे. Okay, and then here I can say what is this segment, right? Segment by sales. Perfect. So I can Sorry, sales, sir. sales. Okay, इसका डेटा लेबल्स भी चाहिए हमें, तो हम लोग डेटा लेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाहर देते हैं, तो आई विल से आउटसाइड एंड, राइट. So I'll copy this, come here and paste it here. Okay, similarly next we have this one. So we will convert this into, for example, बार चार्ट. ठीक है, बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं. क्या क्या बैकग्राउंड कलर पहले बात ये हटा देते हैं, and I will give data labels and then do a right click, format chart area. This one is top 5 subcategories by profit. Okay, I will select this and put it somewhere here. For example, इसको fill करने के लिए let us create one more thing. For example, मैं यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके जगह पे सब कैटेगरी के जगह पे फॉर एग्जांपल मैं यह डाल देता हूँ. ओके, so maybe I want to show it in a similar way, table way. परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो you are following, right, what I am doing? So no. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Values, values, values. Okay, let it be like this only. And format area. इसको कॉपी करता हूँ. So basically you can create any kind of dashboard like this. Okay, and I will add that slicer. हमने एक slicer बनाया था, इस slicer को लास्ट वाले pivot table के साथ भी हमको असाइन करना है, राइट. लास्ट वाला ऑलरेडी हो चुका है, so that is fine. 1 2 3 4. इसको भी कॉपी करते हैं and we will put somewhere. Maybe I will okay, we'll put it at the top.
You can adjust it however you want. Okay, it's a simple dashboard. मतलब just I wanted to show you कि हम लोग कितनी आसानी से we can create a dashboard which is interactive. Okay, you can add multiple visuals here. यहाँ पे आप और एक बना सकते हो as per the requirement. जैसे requirement मिलेगा उसके हिसाब से we can do it. तो कल सुबह अगर हमारे शीट में कुछ चेंजेस होते हैं, डेटा चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल चेंज. अगर ये नंबर चेंज होता है तो हमारे डैशबोर्ड में भी नंबर चेंज हो जाएगा. राइट? जस्ट नो. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? सर डैशबोर्ड में बॉर्डर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? मतलब वो पहले से सेटिंग हुआ था क्या कुछ? कौन सा बॉर्डर? सर कॉलर. मतलब ये जो सेल्स दिखते हैं वो? हाँ सर. हाँ, हमने पहले क्या किया था, डैशबोर्ड बनाने के लिए जैसे नया शीट लिया था ऐसे जो है, तो मैंने क्या किया था, इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया था. तो क्या होता है, वो सब हमें वो सेल्स नहीं दिखेंगे, एक प्लेन पेपर जैसा दिखेगा. इसके ओके ऊपर हमने वो बनाया. ठीक ओके है. सर, गॉट इट. हाँ. अगर वो नहीं करते ये डैशबोर्ड की तरह नहीं दिखेगा, ये एक एक्सेल शीट की जैसा दिखेगा. हाँ. ठीक है, उसलिए जस्ट वो एक फॉर्मेटिंग का स्टेप है. ओके. और एनी अदर क्वेश्चंस? एनी, मतलब कुछ समझ में आया इसमें, या मतलब कैसे आता है रिक्वायरमेंट, क्या क्वेश्चंस हमें पूछना पड़ेंगे, कैसे जनरली आता है, क्या करना चाहिए, थोड़ा ओवरव्यू मिला? यस सर. Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? तो आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, लाइक यू आर स्टडीइंग और यू आर वर्किंग, या क्या? कैन आई नो ए लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट यू? प्रीति, कैन आई स्टार्ट विथ यू? सर मैं MIS हूँ. मतलब अभी मैं रिपोर्टिंग का काम करती हूँ. ओके. और बस रिपोर्टिंग और रिव्यू मीटिंग्स लेती हूँ. बस इतना ही है. तो रिपोर्टिंग में आप ये सब ऑलरेडी कर रहे होंगे? हाँ सर, लेकिन डैशबोर्ड नहीं था. मतलब हमको सेल्स हमारे के वो पास टेबल्स बना रहे थे? डाटाबेस है. हाँ हम्म. सर, हम्म. पिवट टेबल भी नहीं, बस डाटाबेस है. वो मतलब पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म में कि कितना, लेट से कि मैं फार्मर डाटाबेस का कर रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में कितना फार्मर्स हो गए. मतलब इतना हार्ड वाला कुछ नहीं होता है. ओके. नॉर्मल सिंपल ही काम रहता है. बट दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप इसको ना आप यूज कर सकते हो. जैसे कि आपका कौन सा डेटाबेस है? सर फार्मर डाटाबेस. नहीं नहीं, डेटाबेस कौन सा है? जैसे आप कहाँ से डेटा उठाते हो, लाइक सीक्वल सर्वर है, ऑरेकल है, या एक्सेल है, या क्या है? एक्सेल. सर एक्सेल ही है. एक्सेल है, ठीक है. ठीक है, अगर आपके पास डेटाबेस भी होता है जैसे कि एक्सेल सीक्वल हो गया या फिर ऑरेकल हो गया या कुछ भी हो गया, मैं कल आपको एक बार दिखाऊंगा, हम एक्सेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल यू वांट टू कनेक्ट टू सीक्वल सर्वर, आप क्या करोगे, बिग डेटा में आओगे, हम डेटाबेस लोगे, सीक्वल सर्वर दोगे, यहाँ पे आप सर्वर का नाम और उसका एड्रेस देना है, सर्वर नेम, डेटाबेस नेम. उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा. वो करने के बाद क्या होगा, एक्सेल भी आप कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उस डेटाबेस से आप कोई भी डेटा पुल कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इज देयर. अगर आप एक्सेल से ही कनेक्ट करते हो, यहाँ पे क्या है, हमने पहले शीट ले आया, ओके, शीट को पहले से ले आया यहाँ पे. मगर फॉर एग्जाम्पल आपका शीट कहीं पे स्टोर होता है हमेशा, जिसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तब भी हम कर सकते हैं. तब हम क्या करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक बोलेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हमारा एक्सेल कहाँ पे है. ओके, ऐसा हम सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, ऐसे इंपोर्ट करके हम कर सकते हैं. एक सेकेंड. ऐसे पुल करके हम लोग वहां से भी हम बना सकते हैं. ये कैसे करना है, आई विल टेल यू टुमारो. ठीक है,
how we can pull multiple tables from different places and how can we can create, I will show you tomorrow. ठीक है, but उससे पहले ये बेसिक है, आज हम नया, that is the basic one. Okay, you should know this one. अगर ये आ गया वो भी आसान है, उसको वहां पे क्या है ना, डेटा को कैसे लाना है पता होना है, और थोड़ा बहुत क्लीनिंग कैसे करेंगे. ओके, क्लीनिंग मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बस आज एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, कल वी विल डू इट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, पिवट टेबल में आ गया, इंपोर्ट कर लिया, इसको डेटा ले लिया, और मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में चला जाऊंगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी हैव सम डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा क्लीन करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉलम रो 1 रो 2, इट डजंट लुक्स गुड, हमारा डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट. ऐसा ना, सर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप 2 रोज को डिलीट करने पड़ेंगे. तो मैन्युअली हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिमूव रोज पे जाएंगे, टॉप रोज में जाएंगे, उसमें क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ रोज इज 2. तो क्या होगा, टॉप 2 रोज डिलीट हो जाएंगे. इसके बाद अभी ये वाला कॉलम नेम आना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट रो में आ रहा है बट हमें कॉलम नेम आना चाहिए. तो आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये आ जाएंगे. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुछ और कुछ करना है, क्या करना है, क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल इसको ना पूरा अपर केस करना है. एक्सेल में हम क्या करते हैं, जनरली अपर करके एक फॉर्मूला यूज करके इस सारे को कैपिटल लेटर्स करते हैं. बट ये पावर पिवोट में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ से बोल दो अपर केस, तो ये अपर केस हो जाएगा. अगर आपको प्रॉपर केस करना है, यहाँ पे आ जाओ, इसको कैपिटल ईच वर्ड कर दो, हो जाएगा. और यहाँ से आपको इसको डिवाइड करना है 2 कॉलम्स में. आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, बाय डिलिमीटर, बाय स्पेस, ओके कर दोगे, इसमें 2 आ जाएंगे. ओके, स्प्लिट हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे क्लीनिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. और अगर ये वाला आपको आ गया, आपका पावर बीआई भी आपको आधा आ गया, इसका मतलब. ठीक है, एक्सेल में जो पावर क्वेरी है, इट इज एग्जैक्टली द सेम इन पावर बीआई. ठीक है, वो एक्सेल से ही पावर बीआई बना है. अभी आपके कोर्स में पावर बीआई इन्वॉल्व है कि नहीं है, हाँ सर इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है, राइट. तो हाँ एक्सेल से ही पावर बीआई बना है. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे आ जाता है, या फिर पावर, एक्चुअली पावर बीआई में ये सब सीखना बहुत ही आसान है. ठीक है, जनरली मैं भी जब सिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आपको पहले पावर बीआई सिखाता हूँ, उसके बाद फिर बाद में एक्सेल में आता हूँ. मतलब अभी तक जो सीखे वहां तक छोड़ देता हूँ. और ये जब क्लीनिंग है, ये सारी चीज क्या करते हैं, हम पावर बीआई में पहले सीखते हैं, फिर एक्सेल में आके सेम ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, मैं कल आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, हाउ वी कैन क्लीन द डेटा एंड हाउ कैन क्रिएट ए स्मॉल मॉडल आउट ऑफ मल्टीपल टेबल. ओके ठीक है, ओके सर। ओके. इफ यू डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन वी कैन क्लोज इट. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, कोई भी क्वेश्चन. ओके, इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कैन बी रिलेटेड टू द डेटा एनालिसिस, वट एवर यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क. या, सर मैं पाइवट टेबल का एक मतलब प्रैक्टिस कर रही थी एक ओके. डाटा को लेके। तो उसमें मतलब एक स्लाइसर एक पाइवट टेबल के साथ कनेक्शन हो गया, लेकिन दूसरा दूसरे के साथ नहीं हो रहा था। उसमें स्क्रीन शेयर करूँ? ओके, यू वांट टू शेयर दिस थिंग. आई थिंक आपको होस्ट करना पड़ेगा, राइट. सर मैं रिक्वेस्ट दे रही हूँ। ओके, ओके. सर ये जो स्लाइसर है, हम्म,
सर यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में बस एक ही पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखा रहा है। ये दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं क्या? ये इनपुट सर सेल क्या है, आउटपुट सेल क्या है? नीचे दो शीट है ना? सर इनपुट सेल हाँ 2 शीट है। हम्म तो अभी इस शीट में, अभी जो शीट पे आप दिखा रहे हो वहां पे जो भी पिवोट टेबल है सब एक ही शीट से आ रहे हैं या दो अलग शीट से आ रहे हैं? सर 2 अलग शीट से आ रहे हैं। हाँ, तो आपका जो कनेक्शन बना है अभी, ये जो प्रोजेक्ट है अमेज करके मंडी करके जो है, ये कहाँ से हाँ आ रहा है? सर ये इनपुट सेल से आ रहा है। इनपुट सेल से आ रहा है। और हाँ फिर से वहां पे जाओ। हाँ राइट। अभी आप अगर यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करते हो तो कौन सा शीट फिल्टर हो रहा है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप मंडी को सिलेक्ट करो, हाँ सर ये इनपुट सेल का दिखा रहा है। इनपुट सेल से जो भी डेटा आ रहा है वही फिल्टर हो रहा है, राइट? हाँ जो आउटपुट सेल से आ रहा है वो फिल्टर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो प्रोजेक्ट का कॉलम है, ठीक है, ये हाँ प्रोजेक्ट का कॉलम आपको आउटपुट शीट में नहीं है शायद, है क्या? सर आउटपुट है सर, है सर। आउटपुट प्रोजेक्ट सेल का में है और इनपुट में भी है। हाँ सर। तो इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसको आप अभी मल्टीपल टेबल से आ रहा है, राइट? मल्टीपल टेबल हाँ से जब आता है, हमको हाँ ना एक डेटा मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है? हाँ मतलब एक डेटा मॉडल बनाना पड़ता है, तब जाके ये सब फिल्टर होगा। क्योंकि आप जब ये मंडी को सिलेक्ट करते हो, ये एक अलग सा मतलब इनपुट इनपुट टेबल से ही ये कॉलम आ रहा है, इसलिए ये हाँ सिर्फ इनपुट टेबल को ही फिल्टर कर रहा है। अगर आपके पास एक अलग सा टेबल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ठीक है, और हाँ वो इन दोनों टेबल के साथ कनेक्टेड है, तब जाके ये दोनों फिल्टर होंगे। ये कैसे करना है मैं आपको कल दिखाऊंगा, ओके सर। ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आपने जो स्लाइसर लिया है उसका कॉलम एक ही शीट से आ रहा है, इसलिए वो उसी टेबल को ही फिल्टर कर रहा है, दूसरा वाला फिल्टर नहीं कर पा रहा है। वो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो हाउ टू क्रिएट ए डेटा मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा जब एक मॉडल बनेगा आपको क्या होना है, अभी इनपुट डेटा ये है फॉर एग्जाम्पल, हाँ और आउटपुट डेटा यहाँ पे और एक टेबल है, या फिर मैं एक्सेल में ही दिखाता हूँ। ये एक टेबल है आपका जहाँ पे आपका इनपुट इंफॉर्मेशन है, ओके? हाँ और ये आपका और एक टेबल है जहाँ पे आपका आउटपुट इंफॉर्मेशन है, हाँ ठीक है? अभी हाँ आप क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट कॉलम यूज करके आप फिल्टर करना चाहते हो, हाँ ठीक है? ये प्रोजेक्ट कॉलम है। तो आप जो स्लाइसर बनाए हैं वो स्लाइसर इसमें से अगर लिए हैं तो इसको ही फिल्टर करेगा, अगर इसमें से लिए हो तो इसको ही फिल्टर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉलम है और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट कॉलम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप मॉडल बनाओगे, ये बाहर और एक टेबल लेके यहाँ से आप क्या करोगे, एक रिलेशनशिप आप बनाओगे इसके साथ, और एक रिलेशनशिप आप बनाओगे इसके साथ, और इस कॉलम को लेके आप स्लाइसर बनाओगे। तब क्या होगा, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली ये टेबल भी फिल्टर होगा और ये टेबल भी फिल्टर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है।
you. ठीक है, ये थोड़ा मतलब इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहली बार ही समझ में आ जाए, तो थोड़ा टाइम लेके आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस वन। सर रिलेशन के लिए मतलब दोनों ही टेबल में कुछ म्यूचुअल कॉमन, हाँ, आप जिसके थ्रू फिल्टर करना चाहते हो वो कॉलम होना चाहिए, ओके नहीं तो आप फिल्टर कैसे करोगे? ये कॉमन होगा तभी, अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 2 है, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, तो जब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 है, तो आप जब प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये कॉलम को फिल्टर, ये रो को फिल्टर करेगा और ये रो को फिल्टर करेगा। अगर आपके पास ये कॉलम है नहीं तो ये कैसे फिल्टर करेगा? बेस्ड ऑन ये वैल्यू यहाँ पे आके चेक करेगा कोई मैचिंग वैल्यू है कि नहीं है, जहां पे मैचिंग मिलेगा अकॉर्डिंगली वो फिल्टर करेगा। इसके लिए ना आपको ना पूरा डेटा मॉडलिंग समझना पड़ेगा। फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशन क्या होता है, वन टू मेनी क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, ठीक है, स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है, ये सारे चीजें आपको समझने से देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द डेटा मॉडल। ठीक है, ठीक है बट इन ए सिंपलर वे हाउ टू डू दिस आई विल शो यू टुमारो। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट करने के लिए वी विल रिक्वायर मोर टाइम, so in a simpler way how to do it I will show you tomorrow. ओके सर कोई और any other questions? जो भी मैं बोल रहा हूँ whatever I am talking you are able to understand या कुछ प्रॉब्लम है? मतलब Yes, sir. मेरा स्पीड ज्यादा है या स्लो है? any feedback, any negative feedback या जो भी, if you want anything to change while teaching I can do that. Monalisa, Priyadarshini, Yes, sir. you want me to change anything? No, sir. No, sir. Okay. So if you don't have any questions, I also don't want to waste your time. It's anyway Saturday. So you can enjoy your time and we will meet tomorrow again. Okay? Okay, sir. Sir. थैंक यू Okay. सर Thank you so much guys. We'll meet tomorrow. Yeah. Bye. बाय